हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजय रेसिपीज। एंड आज का जो हमारा रेसिपी वो है मसाला पाव। मसाला पाव इज समवॉट सिमिलर टू पाव भाजी गाइस। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट इज टू मेक पाव भाजी। सच बताओ तो मेरी मम्मी के लिए पाव भाजी बनाना भी उतना ही आसान है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मैं किचन में जाता हूँ और मैं सिर्फ पानी पी के आ जाता हूँ। So masala pav is not as difficult as that, but masala pav tastes almost like pav bhaji, which is made out of onions, capsicum, tomatoes, and कभी-कभी leftover पाव भाजी जो होता है उससे हम मसाला पाव भी बना सकते हैं। And it's a Mumbai street style recipe and बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। And if you like our recipe, please like, share and subscribe to our channel Vijay's Recipes, and please do not forget to hit the bell icon, because bell icon hit करने से आपको सारे वीडियोस की notifications as soon as possible मिल जाएंगे the moment we upload them. Let's make the recipe guys. मसाला पाव बनाने के लिए हम पहले मसाला भाजी बनाएंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे ये 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल और बटर गर्म होने के बाद हम डालेंगे ये 1 इंच जिंजर फाइनली चॉप, 5 to 6 गार्लिक पॉड्स फाइनली क्रश्ड, 3 green chilies finely chopped, 1 onion finely chopped, अनियन सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कैप्सिकम या शिमला मिर्च फाइनली चॉप्ड, 2 tomatoes chopped, अनियंस और टमाटो सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे ये कसूरी मेथी, इसे हम हाथों से क्रश कर लेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, यहाँ हम सी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसमें हम ये 1 लेमन स्क्वीज करेंगे। इसमें डालेंगे ये चॉप्ड कोरिएंडर, मसाला पाव के लिए मसाला तैयार है या मसाला भाजी तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं। पहले पाव को बीच से स्लिट करेंगे, बीच में से कट करेंगे। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून पाव भाजी मसाला, कोरिएंडर,
इसमें हम ये मसाला डालेंगे जो हमने अभी बनाया था। हमारा ये मसाला पाव तैयार है। हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। हमारा ये मसाला पाव तैयार है। हमने इसे सर्व किया है सेब, कुकुम्बर, चॉप्ड अनियन और गार्निश किया है कोरिएंडर के साथ।